अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, लास्ट पेपर में हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए थे। सो नाउ वी विल कंटिन्यू दिस पेपर फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3. Okay, so in this question number 3 is saying the equation for the decomposition of hydrogen peroxide is shown. A sample containing 1 mole of hydrogen peroxide is completely decomposed. The sample releases 98 kilojoules of heat energy. Calculate the heat energy released when 680 grams of hydrogen peroxide is completely decomposed. So, completely decomposed. So, first of all, आपको पहले mole find out करने हैं. So, the mass is given that is 680 grams. So, you need to find out the number of moles first. So, moles is equal to mass over mr. Mass over mr. So, the mass is 680. Mass of what? Mass of hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide is H2O2. H2O2 means H2O2. So the MR for H2O2 is 2 into 1 plus 2 into 16. So total is 32 plus 2 is 34. So 680 divided by 34. So 680 divided by 34 is what? 20. 680 divided by 34 is what? 20 moles. Mole of what? Mole of H2O2, right? Mole of H2O2. So now what is the second step? So 1 mole releases how much energy? 98 kilojoules energy. How much energy would be released if we have 20 mole, right? So X would be equal to 20 into 98. That would give you 1960 kilojoules. Okay, 1960 kilojoules. Then in second part, B part, use ideas about bond breaking and bond forming to explain why the decomposition of hydrogen peroxide is exothermic. अच्छा, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक को 2 तरीक़ों से डिफ़ाइन करते हैं हम यहाँ पर. तो एक तो चीज़ ये है कि एक्सोथर्मिक इज़ व्हेन द एनर्जी इज़ रिलीज्ड फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग. ओके, लेकिन यहाँ ये क्या कह रहे हैं कि यूज़ आइडियाज़ अबाउट बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मिंग टू एक्सप्लेन वाई द डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज़ एक्सोथर्मिक. तो कोई भी रिएक्शन अगर होता है तो हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट्स में बॉन्ड ब्रेक होता है और प्रोडक्ट में बॉन्ड फॉर्म होता है. ऐसे ही होता है. तो जब रिएक्टेंट में बॉन्ड ब्रेक होता है तो बॉन्ड ब्रेकिंग इज़ एंडोथर्मिक एंड बॉन्ड फॉर्मिंग इज़ एक्सोथर्मिक. तो अगर बॉन्ड फॉर्म होने में ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हो जाए देन द रिएक्शन इज़ एक्सोथर्मिक. कैसे लेट्स सपोज मैंने आपको कहा कि जब हमारा बॉन्ड ब्रेक होता है तो वी नीड इतनी किलो जूल्स एनर्जी प्लस 2 किलो जूल्स एनर्जी. ये किसके लिए है? बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए है ये एनर्जी. और अगर मेरे पास बॉन्ड फॉर्म हो गया, फॉर्मेशन के लिए जो एनर्जी रिलीज़ हुई है वो है -5 किलो जूल्स. सो अगर मैं आपको अब कहूँ तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा आपका? -3 आएगा. तो जो -3 आंसर आ रहा है, नेगेटिव साइन शोज़ के रिएक्शन इज़ एक्सोथर्मिक. तो ये है आइडिया बॉन्ड एनर्जी का. तो इसी चीज़ को हमें अभी एक्सप्लेन करना है. तो मुझे लिखना क्या चाहिए कि वाई द रिएक्शन इज़ एक्सोथर्मिक ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड एनर्जी. तो मैं लिखूँगा कि
More energy is released. More energy is released when the bonds are formed. Are formed in the product. And bond formation is exothermic. Set है? Exothermic. Now, in part C, the energy profile diagram for the decomposition of hydrogen peroxide is shown. Identify the energy changes. Energy changes हमें label करने हैं. So the A is your delta H, है ना? A is what? Delta H. Or you can also write enthalpy change. Enthalpy change. Then change B. B is always activation energy. Energy of activation. Energy of activation represented by EA. ये activation energy ये भी लिख सकते हो. The rate of decomposition of hot H2O2 is greater than that of cold H2O2. Use ideas about particles to explain why. ये तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि अगर आप हीट करेंगे सो द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, क्योंकि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, और जब वो कोल्ड होगा सो द पार्टिकल्स हैव लोअर एनर्जी एंड लोअर एनर्जी विल मूव लोअर स्लोअर. सो उनका जो कोलिजन होगा वो भी इतना ज़्यादा सक्सेसफुल कोलिजन नहीं होगा, और जो कोलिजन का अमाउंट है वो भी बहुत, यानी कि लेस अमाउंट ऑफ कोलिजन होगा क्योंकि टेम्परेचर कम है ना. सो अब हम क्या कहें कि ये कह रहे हैं कि जब हम हॉट H2O2 लेते हैं तो उसका रेट ऑफ डीकम्पोजिशन इज़ ग्रेटर दैन दैट ऑफ कोल्ड. यूज़ आइडियाज़ अबाउट पार्टिकल्स टू एक्सप्लेन वाई. तो अब हम करेंगे ये कि व्हेन द टेम्परेचर इज़ ग्रेटर, व्हेन द टेम्परेचर इज़ हायर, सो द पार्टिकल्स हैव हायर एनर्जी. When the particles have higher energy, so they have more and more successful collision. और जब successful collision उनका होता है तो the rate of reaction would increase. तो हम कहेंगे when the at higher temperature, particles have more energy. When the particles have more energy, so they would move faster. So they move faster. When they move faster, so they have successful collision. Hence the rate of reaction increases.